So my name is Kaustubh Kale. As a chartered accountant and CFA, I am a stock sub-broker and a mutual fund distributor as well as an insurance advisor. We help our clients create wealth basically through various financial products that we deal in. Hmm. Since the target audience of the people watching this video is mostly youth, so the most relevant question I would like to ask you is, what is the right age to start investing? So the perfect time to start investing is when you start getting your first salary or when you make your first income. So whether the person is of the age of 22, whether the person is of the age of 25 or whether the person is 18, जैसे ही आपको सैलरी मिलना चालू हो जाए आप तभी इन्वेस्ट करोगे तो फायदा इसलिए होता है बिकॉज सेविंग इज अ हैबिट and Right. habits are good when you the better you start, sorry, the sooner you start the better it is. If a person is making little money only to sustain themselves, so if they put some amount in saving, तो फिर उनका वो कैसे survive कर पाएगी? Correct. So I'll tell you, Akash, how this happens is, Akash, firstly to ask, Hindi English fine है ना mix? Right, right. हाँ, हमें आदत है हिंदी इंग्लिश में इसका. ठीक है. हाँ. So now in the way that the question that you have asked is very pertinent कि अभी assume करो कोई just work चालू कर रहा है, मतलब just he started working and he is receiving a salary which is not too high, which will basically ensure that maybe the income is just equal to expenses. ऐसा कुछ हो रहा है. So in this case, it's fine. As a habit, if he can still remove some small amount of money, but as and when his salary increases, and that is where we always tell our people or all our clients is that you have to focus on your career. Try to build your skill sets, focus on your career, because that is where your active income will increase, and let an advisor take care of your investments. So what you have asked is right. Okay, it is the person's जॉब, इट्स द पर्सन्स ड्यूटी, जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, कि वो इस पे फोकस करके उसकी सैलरी कैसे बढ़े, बिकॉज एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. So how important is it to have a passive source of income as well? A passive source of income is very important because I'll tell you, when you have an active source of income, there are three things that you're giving to it. Okay, one is time. आप आपका समय दे रहे हो, फिर आप पैसा कमा सकते हो. ओके, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं टाइम दे रहा हूँ, इसलिए पैसा कमा पा रहा हूँ. सेकंड इज एफर्ट्स. ऑब्वियसली आई एम पुटिंग इन एफर्ट, और द क्लाइंट और rather the invest or rather the person is putting in efforts. The third thing is he also dedicating money because he has some costs that are going into earning an active income. A passive income is where he has he's not doing much of efforts. Okay, he has already spent some time and spent some money, or rather invested that money to build an asset. That asset is giving him an income, and it's very important because we always tell incomes are not permanent, expenses are permanent. So you don't want to work your entire life, correct? As an active income source, you don't want to work your entire life. That's why it's important to have a passive income, because don't link your retirement to your age, link it to financial freedom. आपके दिमाग में financial freedom ये point होना जरूरी है. I think COVID ने भी हमें दिखाया है कि no job is secure. तो अगर if you only have one primary source of income, then anything can happen. करेक्ट. जैसे पता है बहुत सारे लोग ये साइड हसल्स की बात करते हैं, या ट्राई एंड हैव समथिंग एल्स अलोंग विथ योर मेन सैलरी. दैट्स आल्सो समथिंग दैट यू कैन परस्यू. इट्स ऑलवेज गुड टू अपस्किल, लर्न, update yourself and grow in life. So which source of investment would you say is the best? So I'll tell you, Akars, how you have to start investing is, firstly, we already understood why you have to invest, correct? The next important thing is how you have to invest will be based on your financial plan. कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, उसके लिए मैं अभी कहाँ पे हूँ और मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा. जैसे आकर्ष, यू आर राइट नाउ इन दिल्ली, करेक्ट? आई एम इन मुंबई. नाउ इफ आई हैव टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, then the most ideal way is what time do I have to reach, so what time is my meeting for example. उसके बेसिस पे मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करके डिसाइड करूंगा कि मुझे घर से कितने बजे निकलना है, so that मैं 2 घंटे पहले एयरपोर्ट भी पहुंच जाऊं. एंड whatever you, I hope you understood the point. Right. But if you, Akars, have to travel from Delhi to Gurgaon, you will obviously not take a flight, correct? Because as such the airport is also more in Gurgaon and less in Delhi. You will just take a cab and then go to Gurgaon, correct? So that was one way of looking at it. So आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. कौन सा प्रोडक्ट आपके रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और टाइम होराइजन को सूट करता है, ये चार चीजों के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट. Okay. तो
कितना एसेंशियल है एक फाइनेंशियल चार्ट पर एक्सपेंडिचर के बेसिस पे बनाना? सो मैं आपको बोलता हूँ, अगर बहुत सिंप्लिसिटी से के बेसिस पे देखे ना, देन योर इनकम्स हैव टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री बकेट्स. ओके, योर इनकम्स हैव टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल बकेट्स फॉर सिंप्लिसिटी. फर्स्ट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. ये मैं जी रहा हूँ, मैं मेरे घर खर्च है, उसके लिए आई एम पेइंग. ओके, दैट इज लिविंग एक्सपेंसेस. द सेकंड इज एनी लोन्स एंड ईएमआईज दैट यू हैव, तो उसको रीपे करने में आपका पैसा चला जाता है, विच इज द सेकेंड बकेट. द थर्ड बकेट इज योर इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स. सो इफ योर एक्सपेंसेस आर एनीवेयर बिटवीन 30 and 50% of your monthly income, and you're trying and saving at least 30% of your monthly income, then it's a good thing that you're doing. As and when your incomes increase, abhi theek hai, maybe you're on a tight ship, but later on 5, 10, 15 years down the line, the more incomes you have, you should try and save this. ये जो 30% ऑफ इनकम सेव कर रहे हैं ना, इसको 40, 50, 60% तक भी लेके जा सकते हो आप ऐसे. राइट. ओके, सो लाइक म्यूचुअल फंड्स का क्या बेनिफिट है? सो आकर्ष आई टेल यू, म्यूचुअल फंड्स का ये बेनिफिट है कि अगर मुझे एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट करना हो या मुझे 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना हो, तो देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन. ओके, दैट इज बेनिफिट नंबर वन. देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल. कन्वीनियंस होता है, ऑटोमेशन होता है, और एक कन्वीनियंस क्या कि मुझे सपोज लाइक यू राइटली सेड आकर्ष, इफ समवन हैज इज रनिंग अ वेरी टाइट शिप, ठीक है, हिज से सैलरी इज 30,000, उसका मंथली एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ ही हिज स्पाउस और हिज किड्स आर 20,000 के आसपास, वो 10,000 रुपए सेव कर पा रहा है, उसमें से उसको 5,000 उसके लिए साइड पे रखना और 5,000 इन्वेस्ट करना है, तो बंदा 5,000 से भी चालू कर सकता है. some in some products you can start as low as 1,000 rupees, 500 rupees also. So the benefit in mutual fund is, like I said, whether you want to invest for a day or for 15 years, you have a product available. Whatever amount you want to start, maximum limit, minimum limit, as such कुछ नहीं होता है, तो convenience भी होता है इसमें. So the entry barrier, there is no such entry barrier as such. That's why it's convenient. और उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता Risk, so I'll tell you how this, okay, and now this is a sensitive topic. Risk तो है, okay, depending on which product you choose. There are equity mutual funds, there are debt mutual funds, there are hybrid mutual funds. Each of them have their kinds of risks, ठीक है, बट यहाँ पे रिस्क कम क्यों हो जाता है, या फिर आप खुद करो उससे रिस्क कम क्यों होता है. आई एम नॉट सेइंग रिस्क इज लेस. एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम हैज अ risk parameter to it, and they disclose what is their risk associated with that particular scheme. Okay? So without getting into that, what I'm trying to tell you is, if you try and do an investment yourself, but you let the fund manager take the decision, the fund manager taking the decision and the asset management company taking the decision is more beneficial, because they are doing this full time. They have the knowledge, the domain expertise, the wisdom, the experience. इसके वजह से थोड़ा बेटर उनके थ्रू करेंगे तो बेटर हो जाता है, हम करने जाए उससे अच्छा ऐसे. है. राइट. एंड किसी को सेविंग्स करनी है तो वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करे, या फिर इज इट बेटर टू स्टार्ट अ फिक्स्ड डिपॉजिट? Okay, so I'll tell you how this works, Akash. Okay, should we do a case study? Is that easier for you? डेफिनेटली. चलेगा. Okay, अभी आकाश आपका एज क्या अभी? 25. Okay, and are you married? No. Not as of now. ठीक है. So what are the financial goals that you can think of in your next 10, 15, 20, 30 years? अगर इस पे आपको चाहिए तो मैं थोड़ा आपको गाइड कर सकता हूँ. ओके, जनरली 6 तरह के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं. ड्रीम होम, ड्रीम कार, ड्रीम वेकेशन, योर चाइल्ड्स एजुकेशन, योर चाइल्ड्स मैरिज, एंड योर रिटायरमेंट, विच इज एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम. ओके, अभी अज्यूम कर लो इसमें से जो 6 गोल है ना, उसमें से मेजॉरिटी गोल्स आपके लिए सपोज एप्लीकेबल नहीं हो. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. उसमें एक गोल होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, वो है रिटायरमेंट का कॉर्पस, विच इज फाइनेंशियल फ्रीडम. ठीक है. नाउ आकर्ष, एंड वील टेक अनदर गोल अलोंग विद इट. से दैट यू वांट टू डू अ यूरोप ट्रिप इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स. ओके, तो अभी आकर्ष आपके दिमाग में होगा, कौस्तुभ ना, मुझे रिटायर होना है व्हेन आई एम 45 इयर्स. ठीक है, मतलब 20 साल में मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ऐसा आपने मुझे सपोज कहा. ठीक है, अभी 20 साल में रिटायरमेंट चाहिए, तो ये वाला जो गोल का इन्वेस्टमेंट है ना, ये आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो. ठीक है, ये वाला जो गोल है उसको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो. अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने बैंक एफडी, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट या सेविंग्स बैंक में किया, तो प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे इन्फ्लेशन और टैक्स काट के आपको रिटर्न बहुत कम आता है. ठीक है, सो वी से दैट अ बैंक एफडी इज अ सेफ इंस्ट्रूमेंट फॉर 1 year,
but it's a very risky instrument for 20 years. Equities is a risky instrument for 1 year, but is a safe instrument, or rather a relatively safer instrument in terms of inflation taxation from a 20 year standpoint. ठीक है. So एक गोल हो गया आपका रिटायरमेंट वाला. ठीक है, इजी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी दैट आपका चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब गोल भी हो. ठीक है. द अदर गोल इज लाइक आई सेड, अ यूरोप ट्रिप इन द नेक्स्ट 18 months. Okay. Now for your Europe trip in the next 18 months, equity mutual funds is not the right instrument. Okay. For that ट्रिप का जो गोल है आपका, उसका जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, वो आप बैंक रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू कर सकते हो या डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो. सो आपका, मैंने बोल दिया ना, आपको कब पैसा चाहिए, आपको किसके लिए पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए, इसके बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिसाइड होता है. एंड प्रोविडेंट फंड या रिटायरमेंट फंड को बिल्ड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स अर्ली एडल्टहुड में लेने चाहिए? So now this is a very important question that you asked. Okay. आप 25 हो, आपको सैलरी मिलना सपोज चालू हो गया. आपको जब एम्प्लॉय सैलरी देता है, इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर दैट 30 years का टाइम पीरियड से व्हेन यू आर वर्किंग फॉर, आप जब भी 55 तक शायद रिटायर होंगे एज के बेसिस पे, बट इट्स ऑल्सो फॉर द टाइम दैट यू आर गेटिंग आफ्टर, दैट यू आर स्पेंडिंग आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है. सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, यस, the way that you should invest is you have to decide कि आपका current monthly expenses कितना है, वो इन्फ्लेशन के बेसिस पे कितना ग्रो होगा. आपको 55, 45, 50 के एज पे, जो भी आप एज डिसाइड करो, वो एज पे कितना मंथली इनकम शायद लग सकता है टू सस्टेन फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट रिटायरमेंट कॉर्पस यू वांट, एंड उसके लिए आपको कितने का सपोज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए. आज से स्टार्ट करके वैसे लॉजिक होता है. That's how you have to plan. Right. तो फिर क्या बेनिफिट है कि 10 साल पहले कंपाउंड सेविंग करें इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन 30s? How do I tell you this? Okay. So there is a image available. Would you like to see that image if I share screen or? Okay. Yes. So Akash should ask me that why should someone start investing or planning at the earliest, correct? So right. This image will give you a perspective कि अगर किसी बंदे को ना at the age of 60 he wants to retire with a corpus of 10 crore. Okay. He wants to retire with a corpus of 10 crore at the age of 60, and we have assumed a compounded annual growth rate of 12%. Okay. So equity mutual funds or equity Sensex Nifty will give you 11 to 15% compounded annual growth rate. हमने एग्जांपल के लिए 12% अज्यूम किया. ठीक है. तो अगर वो बंदा 20 के एज पे चालू करता है, तो per month he only requires 8,500 to build a corpus at the age of 60 of 10 crores, क्योंकि 40 साल होते हैं उसके पास टू इन्वेस्ट. ठीक है. अगर वो बंदा 30 के एज पे चालू करता है, if he starts at the age of 30, then he requires a monthly investment of 28,600. Okay. So the later you start, the उतना ज्यादा आपको बर्डन हो जाता है मंथली इन्वेस्टमेंट का. आप जितना जल्दी चालू करते हो, you have more years of compounding to go. So the sooner you start, the better it is. That is why we say that you should start as early as possible, because compounding में ना time is an unfair advantage. So this was the screen. This was about it. Okay, what type of insurance should I get if I'm starting early in my life? I've started my career. So Akash, the first important thing is there are अभी risk management पे जब हम आते हैं, ठीक है, say you have started earning, okay, you have started earning and you are saving towards your financial goals. यहाँ पे एक बड़ा risk क्या होता है पता है क्या? The entire money that you have saved can go towards a hospital bill, because right. If some critical illness comes up, or if there is any accident that happens with any person, and all of these things can happen to any person, it's not right. No one is immune to it. So the most important insurance that you should buy as soon as possible is buy a health insurance, mediclaim for yourself. Don't depend on the employer, because employer के product में भी अलग-अलग challenges और problems होते हैं, उसके लिए एक अलग यही लगेगा. But the point is, don't depend on employer. Buy your own health insurance. It will help you to safeguard and protect your savings and investments, so that you are on the journey and वो journey पे कोई disruption नहीं है. That was one kind of thing. The next is you can buy a term insurance if your
parents or if your spouse is dependent on you later on in life, okay, basically if you have people dependent on your monthly income, then you should buy a term life insurance. If you have any loans outstanding, then again you should buy a term life insurance. So first Right. primary, very priority wala is health insurance. The next priority is term life insurance. Right. Okay. And what about insurance from suffering from an accident or a mishap? सो आपका ये जो इंश्योरेंस वाला है आपका वो एक तो हॉस्पिटलाइजेशन विल बी टेकन केयर थ्रू द हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है. आपको अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अलग तरह के राइडर्स ऐड करने हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर हुआ या फिर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर हुआ, तो ये सब चीजें भी आप उस पे एक एड ऑन के तौर पे ऐड कर सकते हो, विच एन एडवाइजर हुएवर यू आर बाइंग इट थ्रू विल एक्सप्लेन यू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. And if I want to take care of my parents during old age, so what kind of investment should I start making? So in this case, I'll tell you honestly, Akash, what happens is your parents have to start investing and saving for themselves. मतलब when they were working, ठीक है. अभी आप नहीं वो they don't have the funds where you would want, where they are unable to earn that kind of monthly income, then you have to try and save for them as a separate thing in say an equity mutual fund हो गया. अगर उनके पास टाइम है for their retirement, तो अगर वैसा रहेगा तो you can also chip in some money and they can also invest and both of you can pool some funds for them. So ideally depending on the time horizon, an equity mutual fund will work out best. बाद में जाके उनके पास एक बार बड़ा कॉर्पस आ जाए तो उसमें थोड़ा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर लिया या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट ले लिए, कोई पेंशन प्रोडक्ट्स ले लिए, वो भी चल जाते हैं बाद में. Okay, and if I as a youth wants to go abroad and study, so what kind of loan can I take? So you can take an education loan. It's better that you take an education loan and then repay it yourself rather than burdening your parents for it, because उनको ना honestly बाद में लोन मिलता नहीं है, because जब उनका इनकम नहीं होगा, suppose active income, salary source या business income अगर नहीं होगा for whatever reason, then later on they will be under problem. So the best is you take an education loan and again consult a loan advisor for it, because he'll be able to guide you best on the rates available and कहाँ पे कौन से education के लिए क्या best हो सकता है ऐसे कोर्स के लिए. And like this concept of cryptocurrency is so new, so should people start investing in it or is it very risky? So cryptocurrency, for example, we have no view on it. I'll tell you honestly, because currently it is anti-establishment. If you see, it does not have currently the blessings of whether it's the Ministry of Finance or whether it is RBI, whether it is India or whether it is China. It's as such anti-establishment. Anti-establishment means I generally like to invest in products where the finance ministry या जो भी regulatory authority है वो प्रोडक्ट को बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है. गारंटी ये सब प्रोडक्ट, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे इसका वैल्यूएशन आता नहीं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. सो दैट इज द अदर थिंग. एंड इफ यू सी द नरेटिव आल्सो, वेदर इट इज टैक्सेशन, वेदर इट इज टीडीएस जो अभी के बजट में है 2022 के फाइनेंस बिल में है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो maybe they want people or retail to stay away from cryptocurrency in India at least. Right. So instead, if a person wants to make investments for large amounts of money, तो उनको shares में जाना चाहिए या security के लिए bonds में जाना चाहिए? नहीं, सो मैंने जैसे कहा ना, अगर आप बॉन्ड्स देख रहे हो तो वो फिक्स्ड इनकम वाला बकेट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, या फिर आपके लॉन्ग टर्म का एक छोटा सा पोर्शन के लिए ठीक है. अगर आप शेयर्स देख रहे हो तो शेयर्स के लिए दो रूट है, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, एक डायरेक्ट इक्विटीज है. अगर आप अमाउंट छोटा छोटा इन्वेस्ट कर रहे हो, विदाउट टेंशन इन्वेस्ट करना चाहते हो, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ रिसर्च का हैसल्स एक्सेट्रा, then equity mutual fund is perfect. If you have a good corpus to invest, not just to begin with, but monthly and quarterly also, where you get good amount to invest, then maybe you can go for shares. If you have the research skill sets, if you have the time to research, pick stocks, etc., then equities is also fine. Yes, and if someone wants to contact you to get financial advice, how can they do? Then in that case, Akash, thank you for this question. He can certainly connect with me on any social media, or I'll just give you the number and you can display it online. So be perfect. Okay. So if someone wants to buy in gold, so like, is it a good idea? So buying gold is a fabulous idea. I personally also try and have at least 10 to 20% of my investments in gold. Gold is a natural hedge against equity.
And to take your question forward from cryptocurrency, gold is honestly something that has a lot of value, and value will increase because of various reasons. Whether it is currency, जो हम लोग currency छाप रहे बोलते हैं, and central banks etc. उसके perspective से भी gold is one thing that I believe has a lot of value, and this value will increase. It's a good hedge against equity, and if economies are not doing well, so gold should be a part of your portfolio. 10 to 20% can be invested. You can do it through gold mutual funds. You can do it through digital gold, or you can buy sovereign gold bonds also. Gold mutual funds largely are one of the most convenient routes where you can buy that. Avoid physical gold because उसमें क्या अलग अलग challenges आते हैं कि storage हो गया, या फिर partial redemption हो गया, safety हो गया, maintenance हो गया, ये सब challenges आते हैं. तो उससे अच्छा, and in fact I was reading an article recently where gold at its all time high, jewelers were not accepting the gold also, जो जो jewelry था ना वो, because maybe they were expecting gold prices to come down. So आपको जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या आपको इच्छा होती है कि अभी मैं बेचूं गोल्ड का ज्वेलरी, तभी शायद बेचने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है. So when you invest in a gold mutual fund, you know that the counterparty will not cause a problem, and you can redeem the mutual fund very easily. So gold mutual fund is convenient. Right. And if would you say that it is also later in the life a safe investment to buy a house and put it on rent? Okay, so Akars, about this, what I'll tell you is it depends on where the house is. ठीक है. आपको पता है रियल एस्टेट में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं कि कौन से सिटी में है, कौन सा डेवलपर का प्रोजेक्ट है, वेदर इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज रेडी पोजीशन, वहाँ के एम्यूनिटीज कैसे है, वहाँ पे आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, ये सब चीजों के बेसिस पे डिपेंड करता है. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन रियल एस्टेट, बट वन थिंग दैट आई विल टेल यू आकर्ष इज in India there is an oversupply, okay, of real estate. So we generally recommend, and real estate has multiple problems. You can't again partially redeem. जैसे अगर मुझे मैं अगर किसी एक क्लाइंट ने सपोज 1 करोड़ रुपीज ही हैज अवेलेबल टू इन्वेस्ट, ओके, ही कैन आइदर बाय अ 1 करोड़ का हाउस और ही कैन इन्वेस्ट इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड. अभी प्रॉब्लम क्या होता है, वो 1 करोड़ का घर खरीदता है, उसको जब बेचना होता है तो he can't sell part of the house. He can't sell one drawing room or one bedroom. He has to sell the entire house, correct? But in a financial instrument, he can do that partial redemption. Right. जो फायदा होता है. तो अगर आपको रेंट पे चढ़ाना है तो उससे अच्छा देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप क्या करो, आप you invest in a set of various mutual funds, consult a financial advisor, and then do it. Invest in a set of various mutual fund schemes and start a systematic withdrawal plan. The systematic withdrawal plan will work similar to your rental income only, and यहाँ पे आपको tenant, broker, इसके सबके झंझट नहीं है ऐसे.